हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या क्या चल रहा है? सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। मैंने एक लाइव स्ट्रीम शुरू किया था पर वो रोटेट मोड कुछ हो गया था, सो आई सेड आई क्विकली, माय फोन इज एक्टिंग अप, सो आई डू दिस फ्रॉम द डेस्कटॉप. होपफुली द क्वालिटी इज गुड इनफ फॉर यू गाइस. क्या चल रहा है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? लेट मी नो व्हाट्स हैपनिंग. कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है? आई एम बैक इन द हाउस. आई वाज इन चेन्नई एंड देन आई वाज इन पौंडीचेरी शूटिंग अ फिल्म. बहुत बहुत मजा आया मुझे. मैं कल रात को लेट आया तो मैंने कहा चलो भैया आज हम आ जाते हैं आपसे मिलने. What's happening? Let me know. I missed the first match. I caught a bit of the highlights because I was actually shooting in Pondicherry, जहाँ पे network surprisingly Pondicherry was the network was really bad. और जिस होटल में मैं रुका था, it's a good hotel. I mean, it was fairly expensive, but Wi-Fi was virtually non-existent. तो unfortunately मैं वहाँ से नहीं देख पाया मैच को. But what's happening? Let me know. क्या होगा आज? कोई प्लेयर रेस्ट होगा आज? आपको लगता है क्या कोई प्लेयर नहीं खेलेगा आज? We know for the third match that Rohit and Kohli and Kuldeep and Hardik will come back. Whether they play is a different matter, but they were definitely in the squad for the third match. It was very very interesting the last match. हाँ, इसी बात पर शुभम कह रहे हैं शमी की जगह शार्दुल को क्यों खिला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. नहीं, बात तो काफी काफी ऑब्वियस है क्योंकि टीम की डिपेंडेंसी, क्योंकि बैट्समैन काफी इरेटिक फॉर्म में थे और अगर आपके आखिरी चार अगर बॉलर हो तो बैटिंग वीक हो जाती है. लेकिन पॉइंट ये कि शार्दुल नहीं चले 10 ओवर 78 रन और उसी मैच में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिया. तो अब लोग कह रहे हैं कि इस मैच के बाद कि शामी को क्यों नहीं खिला रहे. द पॉइंट इज शामी को ही हैज हिज इश्यूज. आई एम नॉट सेइंग कि वो कम बॉलर है, वो अच्छे भले वनडे बॉलर है, काफी अच्छे उनके स्टैट्स हैं, बट बिटवीन बुमराह एंड सिराज ही विल ऑलवेज बी द थर्ड चॉइस प्लेयर. शामी इसीलिए खेले क्योंकि मोहम्मद सिराज पिछले मैच से बाहर थे. The problem is when you play Mohammad Shami और by chance अगर top order और middle order नहीं चला तो अचानक you have, like we saw in that Asia Cup match, Jasprit Bumrah came out to bat in the 38th, 39th over. So it's because the team has not been able to get enough runs from the batsmen consistently, and because Shami, Bumrah, Chahal, Kuldeep, Siraj ये अपनी बैटिंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं डाल पाए. तो बेशक शामी सिराज और बुमराह को खिलाकर आप अपने चांसेस इंक्रीज कर रहे हो कि सामने वाली टीम को आप जल्दी ऑल आउट करो, और अगर हो गया तो बढ़िया है. लेकिन अगर वो तीनों नहीं चले और आपकी बैटिंग नहीं चली फिर आपका टेल बहुत बहुत लंबा है. इसीलिए शार्दुल ठाकुर हैज बीन प्रेफर्ड बिकॉज ही स्टिल फॉल्स इन द ऑलराउंडर कैटेगरी. लेकिन दिक्कत की ये बात है कि पिछले मैच में उनकी बॉलिंग नहीं चले और एशिया कप में जहां बॉलिंग ठीक ठाक थी वहीं उनके बल्ले से रन नहीं आया. तो अनफॉर्चुनेटली शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा. इनके पास बेहतरीन चांस था वर्ल्ड कप में ज्यादा मैक्सिमम मैचेस खेलने का, लेकिन जब वो बैट से कुछ नहीं कर पाए एशिया कप में और अब एक मैच में शामी ने आकर 5 विकेट लिए, वही शामी जो 2 मैच में एशिया कप में काफी ऑफ लगे, अब टीम्स के पास काफी मुसीबत है. प्रतीक सिंह, हेलो जय भाई. सुंदर और अश्विन में से कौन सा जा रहा है वर्ल्ड कप? आई थिंक विल बी वॉशिंगटन सुंदर. एंड एक एक मैच से कैसे जज कर सकते दोनों को? वही बात है, मैं दोबारा कहूंगा इस बात को जो मैंने 2 वीडियो में कहा था कि अश्विन को 6 साल के बाद 2 मैच वनडे मैच के बाद उनको डालना ये मेरी समझ से बाहर है. अगर टीम को, मुझे सुनने में आया है कि अगस्त के महीने में रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे अश्विन की जरूरत है, तो अगर खुद भारतीय टीम के वर्ल्ड कप कप्तान को लगा अगस्त के महीने में कि उन्हें अश्विन चाहिए तो वो तो एशिया कप स्क्वाड में क्यों नहीं थे अश्विन? अब अचानक आपने उन्हें 1.5 साल के बाद बुलाया. आई नो ही बोल्ड डिसेंटली बट 10 ओवर्स 47 रन्स 1 विकेट, इज दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम अश्विन? तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रतीक कि एक मैच में आप कैसे उन्हें जज कर पाएंगे. इंडियन टीम ने खुद अपने आप को इस मुसीबत में डाला है. जेमी सर, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई इज इंडिया प्लेइंग इन सो मेनी मोर वेन्यूज? पर यार वर्ल्ड कप में आप एक जगह पे 2 मैच नहीं खेलोगे ना. आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, आप 11 में देखो, आपको अलग अलग वेन्यूज में खेलना है. आप 9 टीम्स के साथ आप 9 अलग वेन्यूज में खेलोगे. आप एक एक वेन्यू पे आप नहीं खेलोगे. तो इसमें कोई नई बात नहीं है शक्तिमान. जय हाय जय हिंद. अब इंडिया की टीम सबसे बेस्ट लग रही है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट को हेजवुड नहीं थे, फिर भी इंडियन टीम ऑन टॉप. बारिश के क्या हालात हैं? बारिश तो फिलहाल यहाँ नहीं होगा इंदौर में. लुक, इंडिया हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे, पर अभी भी श्रेयस अय्यर को लेकर अभी डाउट्स हैं, शार्दुल ठाकुर को लेकर डाउट्स है, अक्षर पटेल को लेकर डाउट्स है, ईशान किशन अगर वो खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे. सो यस, दैट विन ओवर ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी वेरी गुड, coming just 5 days after India demolished Sri Lanka. I still maintain they're a semi-final team, but जब ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम आएगी तो they're still my favorites for the World Cup. बुमराह रेस्ट इन मुकेश कुमार कहां से आ गया भाई?
Anup, is Mukesh Kumar is playing today. Mukesh Kumar was not even in the squad. ये आपने मुकेश की खबर कहां से ली आपने? Mukesh Kumar is back and playing cricket for India. Anup Kumar, what are you saying? Also, why is India obsessed with 8 batters formula? It's because in a World Cup, you do not want, like I've been saying, you don't want your batting to end at number 7. Remember the Asia Cup match against Sri Lanka when Jasprit Bumrah came out to bat in the 39th over? You need batting. Unfortunately, it's a case of the bowlers not working on their batting enough and India not having enough part-time bowlers. So Shami, even after being brilliant, has to be third seamer in. Shami has been very good, but let's face it, Shami will always and always come behind Bumrah. Bumrah is a far better one-day bowler, and Mohammad Siraj twice in the span of 8 months has been ranked number 1. So it's unfortunate, but Shami will always fall behind Mohammad Siraj and Bumrah. But where in the world, Anu, have you brought in? Has Mukesh? Have I missed something? Has Mukesh Kumar been called in? I have to check my phone. भैया ये मुकेश कुमार का नाम कहाँ से आया भाई? I'll be shocked if Mukesh Kumar. Checking my phone right now. Please tell me where you've heard this Mukesh Kumar news. I thought Mukesh Kumar was done. Mukesh Kumar तो Asia Cup squad में नहीं गए. मुकेश कुमार का नाम कहाँ से आया भाई? हाँ मैं मुकेश अनूप ने तो अनूप यार क्या कर रहे हो? डरा दे मुझे. हाँ हार्दिक भाई कौन आया है? मुकेश कुमार कहाँ से है? वो तो एशिया कप स्क्वाड में नहीं है. ये जानबूझ के मुकेश क्या अनूप ने मुझे चकमा देने की कोशिश करी. एनीवेज आई वांट यू टू नो, मेरी छोड़ो, मैं तो यहाँ बक बक करता रहूंगा. आप लोग बताइए, इफ इंडिया हैव टू पिक अ रिप्लेसमेंट फॉर अक्षर पटेल, आप किस खिलाड़ी को देखना चाहोगे? अश्विन को, वॉशिंगटन सुंदर को? डू यू थिंक चहल शुड मेक अ सरप्राइज कमबैक? भैया जहां पे इंडियन टीम की बात हो तो कुछ भी सकता है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? What about Sky? You know, you've seen that Sky has been in and out. He's not been able to hold down his place. मैं काफी वोकल रह चुका हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि स्काई को ज्यादा मौके दिए गए हैं. लेकिन पिछले मैच में 50 of 49 balls, a very good innings, a very good partnership with KL Rahul. If he bats, he should bat at number 6, but I just don't see him playing enough matches in the World Cup. Yes, बुमराह ट्रैवल नहीं करता. मुकेश को ऐड किया बट खेलेगा नहीं. या अब बुमराह को क्या हो गया? तो बुमराह भी वर्ल्ड कप से बाहर जाएंगे. मुकेश को ऐड क्यों नहीं? मुकेश कहां खेलेगा? शार्दुल, अगर वर्ल्ड कप के 10 दिन पहले ये मुकेश कुमार को खिलाएंगे भैया, फिर तो भाई ये खबर आपको मिली कहां से? एक सेकंड प्लीज, इफ समवन कैन पोस्ट द लिंक. मैं आज शो अपने डेस्कटॉप से कर रहा हूं, यहां से नहीं कर रहा हूं मैं. लेट मी जस्ट सी, इज देयर एनी न्यूज़ अबाउट मुकेश कुमार? बेस्ट प्लेस ट्विटर विदाउट फेल मुझे बताएगा कि मुकेश कुमार है या नहीं. मुकेश कुमार, चलिए इसी बात पे. आई एम ग्लैड यार आपने मुझे ये सही खबर दिया है. मुकेश he's gone to visit his family and given a short talk. भाई साहब, मुकेश को ये गड़बड़ लग रहा है मुझे. अचानक एक मैच छोड़ना, और बीसीसीआई कभी हकीकत में नहीं बताएगी कि हुआ क्या. इफ मुकेश कुमार सडनली प्लेज दिस मैच, भैया मुझे बहुत बहुत गड़बड़ लग रहा है. यस, बुमराह ट्रैवल नहीं कर रहा है. मुकेश कुमार, सर इंडिया लकी से जीता गया. ऑस्ट्रेलिया ने भोकू राहुल का कैच छोड़ा, सूर्यकुमार का कैच छोड़ा. इंडिया, देखो, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया प्लेड अंडर पावर क्रिकेट बिकॉज़ इंडिया वर नॉट एट फुल स्ट्रेंथ, बट यू नो there was no Hazelwood, there was no Mitchell Stark. कोई बात नहीं. राहुल ने भी एक मिस स्टंपिंग किया था, but given it was a tricky target, I think India can take a lot of positives because their second string team did beat Australia, so I wouldn't be too harsh on them. Bumrah has been given a break. It's very strange कि अचानक I'm gonna have to see more about this. मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. Akshar was a replacement for Jadeja, correct? Don't see any replacement at Akshar this time. Finger spinner or wrist spinner, which is a match-winning type. Very good question, my friend Damru. I'm going for wrist spinner. देखिए, आपको अभी वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको एक अग्रेसिव स्पिनर चाहिए, यानी कि एक विकेट टेकिंग, रिस्क टेकिंग स्पिनर. जडेजा अटैकिंग नहीं है. जडेजा एक रिस्ट्रिक्टिव स्पिनर है. अक्षर पटेल एक रिस्ट्रिक्टिव स्पिनर है. अश्विन एक रिस्ट्रिक्टिव स्पिनर है. वॉशिंगटन सुंदर एक रिस्ट्रिक्टिव स्पिनर है. अटैकिंग रिस्क लेने वाले बॉलर्स वो होते हैं जो बॉल को हवा देते हैं. वो है कुलदीप यादव और चहल.
चहल को तो आपने लगातार 2 वर्ल्ड कप से बाहर किया है, आपने उन्हें एशिया कप से बाहर किया है और अभी आपने इस वर्ल्ड कप से बाहर किया। बचे कौन आपके अग्रेसिव अटैकिंग स्पिनर? कुलदीप यादव, अश्विन, सुंदर, जडेजा, अक्षर, ये चारों ये रन रोकने वाले विकेट टेकिंग वाले बॉलर्स नहीं है। आई वुड हैव लव्ड टू सी अ मोर अटैकिंग स्पिनर बट आपके पास वो ऑप्शन है ही नहीं। जो आपके पास ऑप्शन था ये तो मैं जैन के महीने में मैंने कहा था, जैन के महीने में 9 महीने पहले मैंने कहा था कि चहल वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे क्योंकि जब से रोहित शर्मा कप्तान बने हैं तो चहल उनके अंडर बहुत कम मैचेस खेल रहे हैं। यू हैड अ सेकंड अग्रेसिव स्पिनर बट you didn't play him in more than 3-4 one days the whole series, the whole year. You were more dependent on the restrictive spinners. Akshar Patel, Jadeja, Washington Sundar, they will never run through a lineup taking 4 or 5 wickets. In this year, who's taken 4 or 5 wickets? Kuldeep Yadav. Asia Cup में back to back matches, बल्कि back to back days में पाकिस्तान के सामने 5 विकेट और अगले मैच में श्रीलंका के सामने 4 विकेट। ऐसी अग्रेसिव बिग विकेट हॉल्स ये अश्विन से नहीं आएंगे, ये जड्डू से नहीं आएंगे, ये अक्षर से नहीं आएंगे, ये वॉशिंगटन सुंदर से नहीं आएंगे। आई वुड लव टू सी अ मोर अग्रेसिव स्पिनर बट इट्स टू लेट फॉर इंडियन टीम टू नाउ फिगर आउट हू टू ड्राफ्ट इन। But sir, other teams are playing at only 4-5 venues because again India is the host nation ना। आप देखिए बीसीसीआई को सारे बड़े बड़े स्टेट एसोसिएशंस को इनको एक इंडिया मैच देना पड़ता है। आप सोचिए अगर वानखेड़े को इंडिया के 3 मैच मिले तो अदर Indian cricket is divided, the structure is divided by all the various stakeholders, right? Every year each venue is allotted a certain number of matches. तो क्योंकि इंडिया होस्ट नेशन है ये तो इम्पॉसिबल है कि एक वेन्यू को, और लेट्स फेस इट इंडिया से बड़े मैचेस किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं होगा। जहां इंडिया खेलेगी वहां पे हाउसफुल के चांसेस हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलेगी, जहां श्रीलंका बांग्लादेश खेलेगी, वहां पे 5-10 हजार ज्यादा लोग से नहीं आएंगे। इंडिया मैचेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी द बिगेस्ट अट्रैक्शन एट अ वर्ल्ड कप। और जब वो मैच इंडिया के अंदर है तो दिस वाई से इंडिया हैज टू प्ले एवरी मैच एट एवरी सिंगल वेन्यू ताकि हर होस्ट बोर्ड को, हर स्टेट एसोसिएशन को ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा रेवेन्यू मिले। इन अ वर्ल्ड कप ईयर इंडिया विल नेवर प्ले अ सेकंड मैच एट द सेम वेन्यू। अलग बात है कि क्योंकि सेमीफाइनल्स बड़े वेन्यूज में है जैसे कि मुंबई और अहमदाबाद, वहां पे अगर टीम जाएगी वो अलग बात है। लेकिन जहां पे लीग स्टेज मैच की बात हो वहां पे 9 अलग मैच ऑब्वियसली 9 अलग वेन्यूज पे खेलना चाहिए। इन बोर्ड्स को फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे 3 मैच खेले क्योंकि वहां लोग उनको देखने नहीं आएंगे। लोग देखने आएंगे इंडियन टीम को, तभी होस्ट टीम को यानी कि बीसीसीआई को उन 9 लीग मैचेस को अलग 9 वेन्यूज पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। Why is Bishnoi not in the picture? Because there's Kuldeep, there's Chahal, there's Ashwin, there's Sundar, there's Jadeja, there's Akshar. When you've only chosen one wrist spinner and he happens to be your most successful spinner of the year, I mean Chahal didn't get a chance. So when Chahal is not getting a chance, Bishnoi to unke piche aate. Lekin like I've said, he's my favorite young Indian spinner. I believe he's got a big place to play for India. I think he'll play all 3 formats. He took 39 wickets for Rajasthan in this year's Ranji Trophy. When Ashwin, when Jadeja retire or they're phased out, Bishnoi ka time aayega. I agree with you. I'm on the same page. X factor. What's the team in combination? Well, toss to ho chuka hoga. Let me open the WhatsApp group. Yes, the team has actually not come. Let me just check the team right now. WhatsApp ग्रुप WhatsApp पे नहीं आया। टॉस तो हुआ होगा अभी। ऑस्ट्रेलिया ऑफ टू बोल, ये रहा इंडियन टीम। आई एम रीडिंग आउट फॉर यू। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा। दैट्स व्हाई मुकेश कुमार वाज नेवर गोइंग टू प्ले। प्रसिद्ध कृष्णा है तो सिराज नहीं है, ऑफ कोर्स रेस्टेड। प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं बुमराह की जगह और KL Rahul is there. Very interesting. Same opener. KL Rahul is keeper. Ishan Kishan, Suryakumar Yadav. I hope Iyer gets some runs. He's very important. इंदौर में सबसे कम होते हैं, अहमदाबाद में इतने सारे क्यों भैया? क्योंकि भाई अहमदाबाद का स्टेडियम ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है, तो जाहिर सी बात है वहां पे होंगे। You think teams like Australia, England bat aggressively because they've been batting depth till 11? Whereas India batting ends at 7. India will play conservatively.
I think they will play a degree of conservative cricket, which is something that I've been saying on my shows. Because whenever in the last year and a half India has tried to play too aggressively, it's often backfired. Be it the Asia Cup of last year, be it the T20 World Cup of last year. So they're going to have, because of injuries, because of up and down form, because of some strange selections, they force themselves, or they're giving themselves no options but to play conservative cricket. So the biggest improvement as compared to 2019 World Cup, says Shubhajit, is that India, our batting lineup has stopped being too top heavy. No, it's, I agree. Shreyas Iyer और KL Rahul के आने से पिछले 2 साल में number 4 and 5 have actually found. But because Rahul and Iyer were out for so long and the top order was misfiring, look at the fact. Shubman Gill has scored what 1800 runs, in the last year and a half. और उनके आसपास किसी प्लेयर के पास 1000 रन भी नहीं है. So it's still, unfortunately, it's still a very top heavy reliant team, because Hardik Pandya has been inconsistent. Ishan Kishan has been floated up and down. Still, and let's face it, if India, again, hear me out, if India have to win the World Cup, Shubman, Rohit, and Virat Kohli will have to be the top 3 run getters. If the top 3 run getters of India's campaign are coming from the middle order, that means India is not winning the World Cup. It's a fact. So I think they remain a very top heavy team. Yes, Anup, Steve Smith captain India to bat first. India to bat first, or Australia have chosen to bowl and put them in? Australia bowling कर रहा है. जी हाँ, मैंने अभी टॉस देखा. Akshat, should Rinku Tewatia Jaiswal shouldn't give? No, because this was India's last chance. We all knew these 3 ODIs were the last chance before the World Cup. ये सीरीज खत्म होता है 27 को, 28 को आपको आईसीसी आपको अपना फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड देना है. There was no point. To my mind, there's no point Rituraj Gaikwad playing this match, right? Because Rituraj Gaikwad is not in the World Cup squad. He's going to the Asian Games. Rituraj Gaikwad, just like Ashwin, just like Washington Sundar, just like Mukesh Kumar, who's been drafted in, they're not playing the World Cup. So why are they playing this series? So again, I'll say it again. I've said it many times. Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill will be India's openers from 2024. And for 10 to 12 years, India का white ball opening pair हो सके टेस्ट में भी ये 2 रहेंगे. रिंकू का टाइम आएगा, because post the World Cup, India will have to take some tough calls on Jadeja, on Virat Kohli, on Rohit, on Sky. Ample time for these names you've taken. Like, there was no point playing them in this series, just like there was no point playing Rituraj Gaikwad. Hats off to him, he got 70 odd, but it was very, very strange. Sir, do you think that Akshar's injury might have allowed Rohit to push for? Absolutely, it's a fact. It's a fact. I discussed this the day the squad was announced. And like I said, मैंने सूत्रों के अनुसार सुना है कि अगस्त के महीने में Rohit Sharma wanted Ashwin back in the squad. If that was true, why didn't he pick Ashwin as the captain of the Indian team for the Asia Cup? That means, and I'll say it again, just like my last video, साफ पता मालूम होता है कि कप्तान, coach और chief selector, all 3 are not on the same page. When the captain wants Ashwin, but he loses the vote 2-3, 2-1, that means this Indian team is still not on the same page. अभी भी गड़बड़ है इनके सिलेक्शन में. हार्दिक पे युवराज जितना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? यार युवराज, come on, Yuvraj was a different kettle of fish. He came from a different era. I wouldn't want to compare what Yuvraj did with what Hardik Pandya did. That's unfair. I mean, Hardik Pandya has got a lot of skill and he's done well. युवराज was one of those once in a generation players यार. हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं है. अब तो साफ है अश्विन जाएगा वर्ल्ड कप जब सुंदर को ट्राई नहीं किया. हाँ, अब अगर सुंदर 2 मैच नहीं खेले फिर तो मुश्किल है. एंड ऋतुराज को इसलिए खिला रहे ताकि मिडिल ऑर्डर पोजीशन चेंज ना हो, सेम ना हो. पर ये टीम तो किशन को हर 2 मैच में चेंज करती है. आई डोंट नो, आई मीन आई लाइक गैकवाड, आई थिंक ही इज गोना हैव अ लॉन्ग फ्यूचर, बट इस मैच में वो क्यों खेले? यू मे एज वेल गिव ईशान किशन द चांस टू ओपन. ईशान किशन आपके थर्ड ओपनर भी हैं और वो आपके मिडिल ऑर्डर ऑप्शन भी हैं. I would have played him. The guy's got 450s in the last 6 matches. Try him. Gaikwad is going to Asian Games, but ठीक है. नंबर 5 पर ईशान स्काई अय्यर. नंबर 5 पर ईशान स्काई अय्यर क्यों होगा वर्ल्ड? नंबर 5 पर आप कह रहे हो 5 पर ईशान किशन खेलेंगे, स्काई खेलेंगे और अय्यर खेलेंगे? नहीं, अय्यर तो 4 पे खेलेंगे और केएल राहुल 5 पे आएंगे. ईशान किशन अगर आएंगे तो नंबर 6 पे आएंगे. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक समथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन विथ योर क्वेश्चन माय फ्रेंड चिन्मय. एनीवे दोस्तों, टॉस तो हो चुका है. लेट्स क्विकली वन मोर टाइम रीड आउट द 11 टू यू. इंडिया इज शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल at 4, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, जडेजा, अश्विन, शार्दुल, शामी,
Prasidh Krishna for Bumrah. On Australia's 11, David Warner, Matthew Short, Stephen Smith. So no Mitchell Marsh today. Marnus Labuschagne, Josh Inglis, Alex Carey comes back in. Cameron Green, Sean Abbott, Adam Zampa, Josh Hazelwood, and Spencer Johnson. Is this Spencer Johnson's debut? I think so. दोस्तों चलिए lovely to join you. Please come back and join me tomorrow. I will recap this match. Thank you for the brief time. Sorry for the confusion. मैंने एक और स्ट्रीम शेड्यूल किया था, अचानक उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल मोड का पंगा हुआ था, वो लोड नहीं हो रहा था, तो फट से मैंने अपने फोन के बजाय मैंने अपने डेस्कटॉप से आज का लाइव स्ट्रीम शुरू किया. Thank you all for joining me on this, and thank you for commenting. Please, if you haven't already hit the like button, please do that. Love you all. Have a great Sunday. Take care. Jai Hind.